Hello everyone. Yes, Namanji, we will take your query up. Let's just wait for Mathur sir to join in. I hope you all can hear me and see me clearly. Please write yes in the chat if I'm clearly audible. Thank you for the confirmation. Please, Tapaji, we will definitely try our level best कि हम आपको options में कोई दे सकें. And वैसे भी आज Sensex expiry है, so we'll try our level best. BDL for 1 year. Guys, please feel free to drop your queries in the chat. We're happy to take it up one by one. अगर हम आपकी queries नहीं ले पाए अभी तो please drop in Stockholm, हम वहाँ पे ले पाएंगे. You're the best host. You try to cover all the queries. Thank you, Manji. Thanks a lot for the feedback. That really makes my day. Good afternoon. Chandan sir will not be joining for this. Chandan sir ने join किया था हमारा monthly expiry on last Thursday and we booked profit and I guess I was not a part of the session but हाँ हमने 25-30 point capture किए थे in the same session. Daneshwarji, I guess I'm not the right person to answer the queries, and I think you might need a demat account for this. Huge profit that day, FNO best points capture rate. I guess Chandan sir's session was a blast, and people made a good profit in it. Madhu sir, I have sent you a request to join the stage. Please accept that. I hope I'm audible, sir. Yes, Anuj. Even you are clearly audible. Yes, Madhurji, Mayurji, Madhur sir will be visible soon. Madhur sir, we have done the introductions. We are all set. We're just waiting for you to share your screen and then start the session. You are clearly visible. You are clearly audible. You can share your screen. I hope Anuj the screen is visible and I'm also visible. Yes, sir. Okay, okay. Right. So yes, very good afternoon, everyone. Welcome back to the Sensex expiry play. Right. So index is doing quite well and almost up by more than 1%. Nifty is up by 300 point. Bank Nifty is up by more than 700 point, roughly 1.5% up. So bulls are dominating the index, right? So for the last, if I talk about the for the last couple of weeks or 8 to 10 days, you can see on the daily chart of the Nifty that bulls are clearly dominated the index. We have hit the bottom towards 22,800, and from 22,800 right now we are trading near 23,700. And few minutes back we made a high of 23,712. So almost 800 900 points rally in last couple of weeks, right? And the good part, index is trading above its short-term moving averages. That's clearly reflecting the bullish momentum will continue in coming session as well. And again, the one more good part for the bulls, that is the India VIX. You can see India VIX cooled off from 18-19 level to 14 level, right? It made a high of 19, and the post budget now the index is cooled down by more than almost 20-25% and back to 14 level. So this again, this also gives the comforting the bulls, right? Today we opened the gap up of more than 150 point, and from the first tick itself, bulls have taken the control, right? You can see on the 15-minute chart, continue forming the height of higher bottom since the 10:30 candle,
and almost it's a 230 now. So quite a good rally by the bulls, and since morning काफी अच्छा पकड़ bulls ने दिखाई है, और अब तक वो momentum continue हो रहा है, right? On a 15-minute chart holding quite well, it's 9 EMA on a 15-minute chart I'm talking about. So Nifty's immediate resistance is around 23,800 900 zone. We are just a few points away from that zone. If that has been taken out, then we can see the rally towards 24,000. But as of now, जो समझ में आ रहा है कि निफ्टी का immediate resistance 23,800 के आसपास है, and the positional support, the immediate support is seen at around 23,500 and then 23,333. So the supports are seen at 23,500 and then 23,333 level, and the resistance is seen at 23,800. And once we are taken out the 23,800 zone, we can see the rally towards 24,000. Right. Few minutes back, around 145 candle, it made a high of 712. वहां से 100 पॉइंट का डिप हमने देखने मिला था, बट अगेन अभी फिर से 40-50 पॉइंट का स्विंग हमें फिर से देखने मिला है. The momentum we require for the option buying is there today, but the problem is Sensex premiums are behaving very weird today. We'll share the chart in some time. Before that, we'll see the Bank Nifty levels. Today, Bank Nifty is up by nearly 1.7% and trading at a day high, right? 50,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है. Almost रेंज ब्रेकआउट हमें देखने मिला है, forming a height of higher bottom since last 8 to 10 trading session, and is near to its 200 demo now. 200 demo is around 50,200. Once that has been taken out, again we can see the rally towards 50,500 and then 51,000. The Bank Nifty, we can see the momentum towards 50,500 and then 51,000. And the supports are seen at 49,750 and then 49,500. Some private banks are doing extremely well today. Look at the HDFC Bank is up by 2%. Even ICICI Bank ऊपर से थोड़ा सा correct हुआ है morning के level से, but again the setup wise काफी strong है. Axis Bank is up by 2.4%. So इसी की वजह से बैंक निफ्टी में काफी अच्छी रैली हमें देखने मिली है आज. काफी अच्छे से मजबूती बना के रखा है बैंक निफ्टी ने, and almost trading at a day high, right? So now let's talk about the Sensex. इसकी एक्सपायरी आज, एंड सेंसेक्स राइट नाउ ट्रेडिंग अराउंड 78,350 के आसपास ट्रेड हो रहा है सेंसेक्स अभी. And if I talk about the support for the next 1 hour for the expiry purpose, the supports are seen at 78,000, 78,100 zone. 78 से लेके 78,100 के आसपास के जोन है, वहां पे एक सपोर्ट है. And for the upside, we can see the resistance towards 78,500 zone. So this is the quick update on the index, right? Now we'll go to the what I'm talking about it is Sensex strike chart. We'll share the chart now. Look at the 78,500 chart. So this is a chart of 78,500 intraday, right? You can see the जो wicks है candles के कितने बड़े हैं. It means it clearly shows momentum तो है, ऊपर भी जाता है, but sustain बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, right? You can see the 1145 candle is around 199 and the close is at 87. Now few minutes back around 130, the high is 271 and the candles close it is around 182. I'm talking about the 15-minute chart, and again the next candle 145, high is 288, close it 200. उसके बाद जो यहाँ पे डिप आया है, नीचे काफी सेलिंग देखने मिली हमें, एंड एट दैट पॉइंट जब इंडेक्स में थोड़ा सा हमें नीचे की तरफ से मूवमेंट देखने मिली, कॉल तो डिके हुआ ही है, बट पुट जो बढ़ना चाहिए था वहां पे पुट के प्रीमियम्स भी बड़े नहीं है. So क्लियरली शोज की स्ट्रेंथ नहीं है, मोमेंटम तो है, बट स्ट्रेंथ जो है होना चाहिए ऊपर के लेवल में, वो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं रही है प्रीमियम्स में. इंडेक्स में स्ट्रेंथ है बट प्रीमियम में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, राइट? This call is trading around 107. I'm tracking both call and put because though the bias is positive, but मैं साथ में दोनों स्ट्राइक्स प्रीमियम देख रहा हूँ, so that हमें समझ में आए कि किस साइड हमें ट्रेड लेना है. मोर प्रोबेबिलिटी तो इसी की है कि हम बाय के साइड ट्रेड इनिशिएट करेंगे, विल गो द कॉल.
बट मैं पुट की प्रीमियम इसलिए ट्रैक कर रहा हूँ, अगर उसमें कहीं डीके हो रहा है तो ज्यादा कन्विक्शन मिलेगा कॉल साइड ट्रेड करने के लिए, और अदरवाइज विल गो विद द स्ट्रेटेजी, बिकॉज इंडेक्स में मोमेंटम आ रहा है बट पुट्स के कॉल के प्रीमियम तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं आप, राइट? So this is a quick update on the index, Anuj. Now we can take some queries, or we'll go with the other part. Sure, sir. So, guys, we have 78,500 call on our radar for the Sensex expiry. Sir, do we have any BDST trade? यस अनुज, एज ऑफ नाउ अभी जो स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं, जैसे हमने कुछ टाइम पहले एक्सिस बैंक इनिशिएट किया है फॉर सीडीआई, राइट? सीडीआई काफी अच्छा, एक्सिस बैंक काफी अच्छा लग रहा है हमें सीडीआई के लिए, सो वन कैन गो विद एक्सिस बैंक फॉर सीडीआई। सीडीआई का लॉन्ग फॉर्म होता है कनेक्शन डिलीवरी आइडिया, राइट? वन कैन गो विद दैट्स एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 1015। ऊपर का हमें लग रहा है कि 1050 1060 के टारगेट आना चाहिए, एंड द स्टॉप लॉस इज अराउंड 985। So, can you repeat once? Yes, sure, Anuj. So Axis Bank right now as of trading at around 1015 with a stop loss of 980 for upside target of 1050 1060. Got it, sir. As I said, प्राइवेट बैंकिंग काफी अच्छा लग रहा है, एंड एक्सिस बैंक हमने इनिशिएट किया था इवन टू वीक्स बैक, वी हैव इवन इनिशिएटेड द 4 वीक फोकस कोटक बैंक, सो उसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम है, एक रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है, इट्स ऑन अ वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट, राइट? मल्टी ईयर का ब्रेकआउट वहां पे कोटक में हो रहा है, सो वन कैन इवन गो फॉर द कोटक एज वेल। So look at again, if I talk about the 78,500, आप देख सकते हो, this is the 242 कैंडल, 1 मिनट पहले की कैंडल है, हाई एट 129 एंड नाउ बैक टू 80। सो दिस इज द मोमेंटम, बट ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, प्रीमियम पकड़ नहीं दे रहा है ऊपर में, सो आई एम ट्रैकिंग द बोथ कॉल एंड द पुट, अदरवाइज विल गो विद द स्ट्रेटेजी। या तो फिर ये भी हो सकता है कि हम कोई ट्रेड इनिशिएट ना करें, बिकॉज आई डोंट वांट कि हमें लॉस हो। Yes, Anuj, now continue with the queries. Sure, sir. I'll just scroll up to the top. Sir, Natco Pharma for BTST. Yeah, stock is up by nearly 6% and एक कंप्लीट रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने मिला है ट्रेडिंग एट 20 डे में। यू कैन गो विद द बीटीएसटी, काफी अच्छा वॉल्यूम भी काफी स्ट्रांग है आज, ऊपर में हमें लग रहा है कि 1250 1260 के टारगेट इसमें आना चाहिए। यू कैन गो विद नेटको फार्मा फॉर द बीटीएसटी। Sir, BDL for 1 year bought at 1300. बीडीएल, Yeah. so before budget, all the defensive stocks are doing defense stocks are doing quite well. You can see BDL ने 28 Jan को लो बनाया था 1136, and then from that it made a high around 1350. Again from last 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस एक हमें गिरावट देखने मिली है, बट आपने जैसे 1300 पे बाय किया है तो यू कैन डू वन थिंग, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1000 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है इट्स बेटर टू एग्जिट, वहां पे फिर से करेक्शन देखने मिल सकता है हमें। Sir, M&M bought at 3222. Bought at 3222. okay.
Setup wise, one of the best counter, काफी bullish setup है. You can see on the chart, it forming a height of higher bottom from last almost 8 to 9 trading session. Look at the weekly chart, it's wonderful. रेंज के ब्रेकआउट पे है और ऑलमोस्ट नीचे से काफी अच्छी रिकवरी देखने मिली है. सो यू कैन कीप द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 3000, राइट. अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो आप बने रह सकते हो. ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 3000 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो. ऊपर में लग रहा है कि एक 3300 3400 का इसमें टारगेट आना चाहिए. इवन यू कैन सी निफ्टी ऑटो में रिवर्सल देखने मिला है एंड एम इज आवर प्रेफर्ड काउंटर. Sir, SBIN bought at 870. बॉट एट 870, थोड़ा सा ऊपर से करेक्शन देखने मिला है, बट गुड पार्ट के फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 4 वीक्स स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन फेज एंड आई गेस इसका 6 को रिजल्ट भी है, तो शायद थोड़ा सा वोलेटाइल का ऊपर नीचे मोमेंटम हो सकता है इसमें. विद स्टॉप लॉस ऑफ 722 यू कैन होल्ड दिस लेवल. अगर ये यहाँ से सस्टेन होता है 800 के लेवल, अगर सस्टेन होता है ऊपर के लेवल में, तो आपको फिर से 900 के टारगेट इसमें देखने मिलेंगे, 900,000 के टारगेट देखने मिलेंगे. Sir, Bajaj Finance bought at 7900 resistance level. Before that, Anuj, I'm tracking the call. थोड़ा सा एक स्पाइक देखने मिला है हमें, राइट. बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि सस्टेन नहीं हो रहा है. इवन 7800 500 की बात करूं मैं तो आई गेस इसका चार्ट लगाते हैं फिर से. तो 78 500 one minute chart. तो इट मेड लो ऑफ 40 एंड बैक टू 100. तो काफी बड़ा स्विंग इसमें देखने मिला है, right? And Nifty is trading almost at a day high now, 722. So let's do one thing. We'll go with the strategy other than going with the naked call buying, right? Right now, Sensex is trading near 78,460. So we can do one thing. We can buy the 78,500 call, right? And we can sell the 78,600 call. So 78,460 के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रहा है, right? So we'll go with the strategy. That will be a better option. Buy the 78,500 call and sell 78,600. 78 के आसपास कॉल चालू है 78,500 का एंड 40 के आसपास जो 600 स्ट्राइक है वहां पे चालू है. तो बेसिकली एक 40 के कॉस्टिंग में बैठना चाहिए. 60 विल बी द मैक्स रिवॉर्ड. $40 will be the max loss. So 800 rupees is the max loss for us in that strategy, right? 78,500 call by at 80 level and 78,600 कॉल सेल एट 40-45 जो भी इसका रेट चालू है, राइट. 40-45 के कॉस्टिंग में बैठना चाहिए. Guys, we have pinned the trade. Please check out the comment section. So till now we have given two trades. One is the Sensex bull call spread, buying at 78,500, call at 78, sell 78,600, call at 40. Combined premium 40 points, maximum reward 60 points. And we have a CDI trade, Axis Bank buying at 1015, stop loss 980, target 1050 and 1060.
Sir, is there anything else that you would like to add? No, Anuj, now we can continue the queries. जैसे ही कुछ होता है momentum, I will update on that. Sure, sir. So Zomato. Okay, so one of the favorite counter and looking at the chart, थोड़ा सा ऊपर से correction देखने मिला है हमें, right? 300 से काफी नीचे आ गया है, almost एक 30-40% का correction हुआ है. If you want to buy this for a long term, you can buy around 210, 220 is a quite a strong support for the Zomato. And ऊपर में in long term purpose, you can see the target towards 400, 450 level, right? तो ऊपर से correction देखने मिली है और काफी अच्छा लग रहा है हमें अभी भी, तो आप buy कर सकते हैं इसे. Sir, Nika 185 call bought at 8.9. Okay, so सेटअप वाइज कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है. अगर कॉल बाय किया है आपने तो मोमेंटम में से एग्जिट कर दे, बिकॉज अदरवाइज टाइम डीके विल हर्ट यू, राइट? जो मेजर मोमेंटम इसका क्रिएट होगा दैट विल बी क्रिएट अबव 180 184 के ऊपर इसका मोमेंटम क्रिएट होगा. इफ इट मैनेज टू क्लोज अबव 184, यू कैन सी द मोमेंटम टुवर्ड्स 190 200. बट एज ऑफ नाउ अगर आपने बाय किया और प्रॉफिट में है तो आप एग्जिट प्रॉफिट बुक करें इसे, दैट विल बी बेटर ऑप्शन. Sir, Zensa Tech. तो जैसा टेक अच्छा लग रहा है, दो स्टॉक इज डाउन बाय मोर देन 8% इन दिस वीक. मे बी कुछ शायद न्यूज आ रहेगा, बट सेटअप वाइज अभी भी अच्छा है. अगर डिप में मिलता है टुवर्ड्स अराउंड 850 लेवल, वहां पर आप बाय कर सकते हो. स्लो एंड स्टेडीली आपको 1000 के टारगेट देखने मिलेंगे. Sir, Anantraj. So we have seen a quite a good correction in the Anantraj. It made a high around 950, and from that almost more than 40% का correction इसमें हो चुका है. So as of now, setup wise तो weak है, because forming a low top, lower bottom from last 3 weeks, and again open high भी इसका same है. So wait करें इसमें, right? As of now कोई buy बनता नहीं है, but शायद एक around 500 के आसपास आता है, तो वहां पर आप buy कर सकते हो इसे. Sir, Irida. For next 1 month view. Okay. So better to avoid, because stock is in a downtrend, or otherwise I can say in a consolidation phase. So even अगर 1 month के हिसाब से भी लेना है तो try to buy near bottom या support के आसपास buy कर सकते हो. Around 178 is a 178 180 is a strong support. Try to buy around 180 level, and वहां से अगर थोड़ा सा आपको spike मिलता है तो उसमें आप exit करें. But कोई खास setup नहीं है इसमें अभी. Sir, Voltas. सो पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स काफी गिरावट हमें देखने मिली है वोल्टास में, बट द गुड पार्ट के इसका वीकली में जो 200 वेमा है वहां पे सपोर्ट लिया है, वहां से फिर से बाइंग देखने मिली है, राइट? तो यहाँ पे भी हैमर बना है डाउन ट्रेंड में, और वहां से फिर से रिकवरी देखने मिली है. सो एज ऑफ नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सपोर्ट, सो 1250 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. थोड़ा सा अगर डिप मिलता है अगर फिर से यहाँ से 100-150 पॉइंट का, वहां पर आप बाय कर सकते हो. ऊपर में टारगेट आपको 1500 के टारगेट इसमें देखने मिलेंगे. Sir, Airtel. So this is the daily chart, and if I talk about the levels, stock is not able to surpass its 1663 level. वहीं पे हर बार resistance ले रहा है. You can see 17 December candle, then
24 Jan candle, even yesterday's candle, and again today आज का high भी around weather के आसपास ही है. So 1663 या 1665 to be precise, अगर ये sustain होता है और hold होता है तो यहाँ पे आप trade ले सकते हो. Support wise 163 is a strong support zone, and ऊपर में आपको जैसे 1665 निकलता है तो ऊपर में आपको 1750 के टारगेट्स में देखने मिलेंगे. सर इंडस स्टार बाइंग एट 398, 17,000 शेयर्स लिए हैं, क्या करूं? Buying at 318. यस, So almost 40 point profits. 398, सॉरी 398. Okay. So 398 तो काफी पहले शायद बाय किया इन्होंने, because even recent swing high भी around 390 के आसपास है. So if I talk about a support, weekly में अगर ये support टूटता नहीं है तो it will be better. 335 is a strong support zone. अगर 335 अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दे, बिकॉज नंबर ऑफ क्वांटिटी भी ज्यादा है. एंड इफ टेकन फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस तो आप इसमें होल्ड कर सकते हो, बट अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो कीप द 334 लेवल एज एस एल. So can you please update on your trade, Sensex trade? Yeah, right, Anuj. So 78,500 call is trading at a 64, and the 76,600 call is trading at a 28. So as of now एक 10 पॉइंट का लॉस इसमें हो रहा है, राइट, बिकॉज थोड़ा सा इंडेक्स स्टक हो गया और वहां से हमें डिके देखने मिला है. दो इंडेक्स इज ट्रेडिंग नियर इट्स डे हाई, बट मोमेंटम नहीं है, इसलिए वो जो ऑप्शंस प्रीमियम थे वो डिके हुए हैं, राइट. दैट्स व्हाई we will go with the strategy, because I don't want कि naked call ले और हमें उसमें लॉस हो जाना. बिकॉज अगर मैं नेकेड कॉल एंट्री करता था 78,500 में अराउंड 100, तो अभी उसमें 34 पॉइंट का लॉस हो रहा है, और मैं स्ट्रेटेजी इनिशिएट किया हूँ तो उसमें हमें 10 पॉइंट का लॉस हो रहा है. इट्स बेटर कि कभी कभी हम इस हिसाब से ट्रेड ले. विल वेट फॉर द कपल ऑफ मिनट्स, अगर यहाँ मोमेंटम नहीं आता है तो विल एग्जिट द ट्रेड. Are you tracking the trade as of now? और कॉल एंड पुट दोनों डिके हुआ है. मैं जो पुट भी ट्रैक कर रहा था वो भी डिके हुआ है. ऐसा नहीं है कि कोई मोमेंटम आया और वहां मिस हुआ है, राइट. अब मोमेंटम आया है अनुज, राइट, तो अभी प्रॉफिट में है ट्रेड हमारा. Almost we are getting call is trading at 130 level, and the 600 call is 60 level. So almost अनुज 50-55 पॉइंट का मोमेंटम हमें मिल रहा है, तो हमारा टारगेट तो वही हिट हो गया है. So one can book Guys, the please profit. book the profits. टारगेट हिट हुआ है पूरा. काफी अच्छा स्विंग देखने मिला है. 3 PM का टिक ऑलमोस्ट देखने मिला है, राइट. नेकेड अगर कॉल में गए होते हम तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, बट वील गो विद द स्ट्रेटेजी, एंड स्ट्रेटेजी में ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए था पूरा प्रॉफिट बन रहा है अभी भी. $35-40 पॉइंट्स के कॉस्टिंग में हमारा था, एंड 60-65 विल बी द मैक्स प्रॉफिट. ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट्स पूरे हमें मिल रहे हैं. So guys, we have booked and had a profitable Sensex expiry, 25 points booked and exited. हमारी last expiry with Chandan sir also was profitable. हमने लगभग what I heard was around 25 to 35 points capture किए थे. We did this in today's session also. I guess our profit streak is coming back in the expiries, and we have Yes. already shared the conviction delivery trade. So that will be all from our side. Thanks a lot, everyone. Thanks a lot, Madhu sir. Anything else that you would like to add before we exit? Yeah, the benefit of the strategy today we have seen. अगर हम नेकेड कॉल में एंट्री लिए होते तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, बट वी एंटर द स्ट्रेटेजी, एंड जो टारगेट था हमारा वही हिट हुआ है, राइट. हमने वेट भी किया था और टारगेट हमारा हिट हुआ है. सो कांग्रेचुलेशंस गाइस, दोज हु मेड द प्रॉफिट, राइट. एंड यस, वी कैन रैप अप द सेशन नाउ. Thank you, everyone. अगर आपकी queries answer नहीं हुई है, please feel free to drop them on Stockholm. We'll be happy to revert. Thank you. Yes, thank you.